My dear brothers and sisters, as you know, the name of the proper nouns has always been a facing problem for the English shorthand writers. We often face problems in writing the names of Hindi proper noun. Here I have brought 50 names of some government scheme which may be beneficial for your upcoming exams. You can practice it in your own outline. Here I will give some outlines. If you like this, you can practice the same. Otherwise, you can write your own outlines. Let's begin the video. First program is Startup India Seed Fund Scheme. How will we write? Start up India Seed Fund Scheme. Let's see. Start up India. Second, Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Gramin, sometimes it may comes Pradhan Mantri Gram Awas Yojana. So how will we write? Pradhan Mantri Awas Yojana. Gramin we can write like this. Third scheme, Arogya Path Portal. How will we write? Arogya Path Portal. Next is Samarth Yojana. This is for repair, fitter and puncture tire. How will we write? Samarth. Samarth Yojana for repair, fitter, puncture. Next is Shram Suvidha. How will we write? Shram Suvidha. Next is PM Gati Shakti Yojana. PM Gati Shakti Yojana. You can give double tick in front of every proper noun so that you can understand that it is a proper noun and you may not do any error during the exam time. Next is Shreyas Scheme. A scheme for higher education youth in apprenticeship and skill. A scheme for higher education youth in apprenticeship and skill. How will we write Shreyas? Shreyas scheme. Next, Seva Bhoj Yojana. Seva Bhoj Yojana. Double dash. Next, Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. Or you can write Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. You can write any of the two. Then give double dash. Next, PM Kisan Saman Nidhi Yojana. PM Kisan Saman Nidhi Yojana or Saman Nidhi Yojana. Next is very important, PM Ujjwala Yojana. PM Ujjwala Yojana or PM Ujjwala Yojana. Next is AICTE Pragati Scholarship Scheme. AICTE Pragati Scholarship Scheme. Pragati Scholarship Scheme. Full form is All India Council for Technical Education. All India Council for Technical Education or All India Council. Next, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.
This one is also very important. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल विकास योजना। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना। कुसुम फुल फॉर्म इज किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। हाउ विल बी राइट? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। नेक्स्ट, पीएम मित्रा स्कीम फॉर गिविंग मनी टू द बिजनेसमैन। पीएम मित्रा स्कीम। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। You can see most of the names are similar, like Pradhan Mantri, Kisan, Yojana, Samarth, Suraksha. So if you will practice this, you will get addicted to it and you will not do error during the exam time. Next is Pradhan Mantri Laghu Vyapari मान धन योजना। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दिस वन लाइक दिस, सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। Why will be like this? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। No need to write Abhiyan as like this because it is the last word and it will cut the line so that you can understand. This is Arogya Abhiyan. Next, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. This one is also oldest but important one. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Jan Dhan Yojana. Or you can separate this जन धन योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। गिव डबल डैश टू ईच एंड एवरी प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। कैसे लिखेंगे? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसको लिख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वंदना योजना। प्रधानमंत्री वंदना योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीन दयाल उपाध्याय ऐसा लिख सकते हैं। स्वावलंबन, जिसका नाम बदल कर हो गया अटल पेंशन योजना। स्वावलंबन अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट है अटल पेंशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। अमृत। सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना। किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना। स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम, its full form is Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. Next, One Nation One Ration Card Scheme. One Nation One Ration Card Scheme. One Nation One Ration Card Scheme. Next, PM Swanidhi, Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi. How will we write? Prime Minister Swanidhi Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi. This one is Pradhan Mantri and this one is Prime Minister. Next is Sahakar Mitra Scheme. Sahakar Mitra Scheme. Sahakar Mitra Scheme. Mission Karam Yogi. Mission Karam Yogi. Next is Swachh Bharat Mission. This one is also very important. Swachh Bharat Mission. Next, PM Matsya Sampada Yojana. PM Matsya श्रमेव जयते योजना. नेक्स्ट, उमंग
This one is also very important. Its full form is Unified Mobile Application for New Age Governance. Umang. Unified Mobile Application for New Age Governance. PM Cares. PM Cares. Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation. Next is Arogya Setu. How will we write? Arogya Setu or Arogya Setu. Anyone you can write. Next is Ayushman Bharat. Ayushman Bharat. Here I am ending my video. If this video is useful to you, then do like, share this video to other steno writers, and then do comment if you find any mistakes in this video. And most important, subscribe if you are new here. Thank you. Good luck for your exam. Take care.